Hello everyone, welcome to online class. My dear students, today in this video we are going to continue the lesson that we had started already previously. Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. And we have understood that part 1 of the lesson and a second part we had just started. And today in this video we are going to see the rest of the things of the second part of the story. In the previous video we had seen that Bipin Babu was there in the bookstore and he was just selecting the books for him, and at that time only Parimal Ghosh is coming and he is just introducing himself to Bipin Babu and saying that Bipin Babu had been to Ranchi and there they had met together, okay, helping each other and all that thing in the introduction and intro they talked about, but Bipin Babu was not remembering, or he had not been to Ranchi, so how can he believe that whatever Parimal Ghosh is saying? Yes or no? And we also saw that about the year or about the month that Parimal Ghosh was saying to Bipin Babu, that October, at that time Bipin Babu was there in his friend's house in Kanpur and he was just celebrating the puja. Okay, so how can Parimal Ghosh say that Bipin Babu had been to Ranchi during those time? Okay, and then whatever may be, as they are returning from that bookstore, he told his driver, just let us go through the bank river Ganga. There at that road we'll go and that way we shall go back. Then as they are coming back on the way, Bipin Babu is remembering all those things as Parimal Ghosh was saying to him. And he is not able to remember, not able to believe that. How can this happen? If I had been to Ranchi, then how can I not remember that one? Okay, and all that things. And Parimal Ghosh also told to him that you had cut in your knee and you had fallen in the Hudru fall. Okay, and there was a injury in your knee. So Bipin Babu, as he's there in the car, he's just trying to confirm. Let me see my knee. Either is there a cut, or is there a fall that I had fall there and I had injured that time? Then when he's trying to see his knee, then yes, there is a mark. Okay, there is a cut mark is there. And that also Bipin Babu is not able to remember when he had got that injury in his knee and that kind of cut mark was there. Okay, and that much we had seen, and Bipin Babu is thinking about that, what to do. My knee is also, there is a mark that is just a proof that what the Parimal Ghosh is saying, that I had gone to Ranchi and I had a fall in Hudru. Okay, so let us continue today. Okay, from where we had stopped in the previous video, we stopped here. Okay, here we stopped as he checked the knee and there was a inch long cut mark was there. Okay, so let us see next. See here, everybody open the textbook and see, look at there. Then Bipin Babu suddenly thought of Dinesh Mukherjee. The man had said that Dinesh was in Ranchi at the same time. So now, as the man said, who is that man here? The Parimal Ghosh. As Parimal Ghosh said that when you had been to Ranchi, that Dinesh Mukherjee also was there. Together we spent our time together. So Bipin Babu is thinking that it is better that he will just contact with Dinesh Mukherjee and he will just confirm either he was there or not. Okay, the best thing surely would be to ask him. He lived quite near in Beninandan Street. Okay, so now what he is thinking is that it is better that I contact with whom? Dinesh Mukherjee, and I will ask him either we had gone to Ranchi or no, and that way he can confirm, okay, what is the true, or either Parimal Ghosh is saying the truth or he is just making up a story. What about going right now? But then if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think? Okay, if Bipin Babu asked for a confirmation. So now as he is thinking there, as they are on the way home, okay, on the way home they are in the car, and he is thinking that it is better that he goes to Dinesh Mukherjee, who is living nearby, okay, in बेनीनंदन स्ट्रीट में रह रहा है वो कौन, दिनेश मुखर्जी। तो उसी के पास जाकर थोड़ा सा कंफर्म कर लेते कि पूछ लेते कि क्या मैं रांची गया था, क्या क्या हुआ था रांची में, इस तरह से।
लेकिन अगर वो जाकर पूछेगा कि रांची में क्या क्या हुआ, किस तरह से इंसिडेंट हुए थे, अगर वो रांची गया ही नहीं होगा तो दिनेश मुखर्जी क्या सोचेंगे उसके बारे में? हाँ, अगर वो रांची गया ही नहीं है और दिनेश मुखर्जी को पूछेगा कि मैं रांची गया था, ऐसे हुआ था, हम साथ में थे, इस तरह से इंसिडेंट्स हुए थे, पूछेगा, कंफर्म करेगा, तो दिनेश मुखर्जी क्या सोचेंगे इसके बारे में, दिनेश बिपिन बाबू के बारे में? दैट इज व्हाट ही इज थिंकिंग नाउ. But then, if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think? If Bipin Babu asked for a confirmation, क्या सोचेगा वो? He would probably conclude Bipin Babu was going nuts. तो इस तरह से अगर वो रांची ही नहीं गया होगा और वो पूछेगा दिनेश मुखर्जी को, तो दिनेश मुखर्जी क्या सोचेंगे कि लगता है बिपिन बाबू अभी गोइंग नट्स हो रहे हैं, मतलब वो पागल हो रहे हैं. ओके, यू कैन सी हियर द मीनिंग ऑफ द गोइंग नट्स. ओके, गोइंग मैड और क्रेजी. क्या बिपिन बाबू क्रेजी हो गए जो इस तरह से बातें कर रहे हैं, जो घटना ही हुई नहीं है, जो जगह में गया ही नहीं हुआ है और उसी के जगह के बारे में मुझे पूछ रहे हैं, है ना? No, it would be ridiculous to ask him. Then also he is thinking. Who is thinking? Bipin Babu is thinking. ये थोड़ा सा ridiculous होगा. Ridiculous मतलब क्या है? Deserving or something. Okay, I have read deserving or inviting. Okay, derision or mockery. Okay, observe. मतलब क्या होगा? Ridiculous मतलब इतना नोटी, मतलब कि careless हो जाना, कि कुछ याद नहीं होगा, तो लोग क्या बोलेंगे, यार ये तो क्या किस प्रकार का आदमी है, पागल है, कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ ध्यान नहीं है उसका. इस तरह से एक मौकेरी हो जाएगी उसके बारे में. किसके बारे में? बिपिन बाबू के बारे में अगर वो जाएगा तो. सो नो, सो इट इज बेटर दैट ही जस्ट नॉट थिंकिंग ऑफ गोइंग टू दिनेश मुखर्जी. लेट अस सी हियर ahead what is going on. And he knew no ruthless Dinesh sarcasm could be. So he knew no ruthless. No ruthless means what is that? Having or showing a pity on other, okay, on others. So now here is that, and he knew how ruthless Dinesh sarcasm, okay, sarcasm could be. Sarcasm मतलब क्या है? का behavior, दिनेश का जो behavior जो है, okay, here you can see here sarcasm means is kind of कुछ लोग होते हैं जो कि बातों बातों में क्या करते हैं, मजाक उड़ा लेते हैं दूसरों का, बातों बातों में उनका फनी बना लेते हैं दूसरों को. तो उसी तरह से ये sarcasm जो बोला जा रहा है, दिनेश भी उसी तरह के आदमी थे. वो मजाक उड़ाएंगे किसका? बिपिन बाबू का, अगर इस तरह से वो जाकर बात करेंगे तो. ओके, sipping a cold drink in his air-conditioned, conditioned living room, Bipin Babu felt a ease again. Such a nuisance just because they have nothing else to do. They go about getting into others people's hair. Okay, so now here what is that? Sipping in cold drink is there with him. Cold drink वो लिया है, ठंडा ड्रिंक कुछ लिया है, उसके बाद वो थोड़ा सा सिपिंग मतलब थोड़ा थोड़ा करके पीना, जैसे कि हम चाय पीते हैं. ओके, तो उसने वहाँ अपना एयर कंडीशन में बैठा हुआ है लिविंग रूम में और वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा है. और बिपिन बाबू क्या थोड़ा सा महसूस हुआ, उसको थोड़ा सा ईस फील हुआ. ईस मतलब क्या है? थोड़ा सा फिर से परेशानी महसूस हो रही. ओके, such a nuisance, okay, such a nuisance just because, and such a nuisance, कौन सा such a nuisance हुआ, कौन सा इंसिडेंट? nuisance means what is that? a person or thing causing annoyance. मतलब ये जो इंसिडेंट हुआ, जो दुकान में वो परिमल घोष के साथ उसका मुलाकात हुआ, परिमल घोष ने इस तरह से बात बताई उसको, तो वही सारी चीज उसके दिमाग में पूरा अभी तक घूर रहा है. अभी तक उसके मन में है कि क्या है क्या है क्या है क्या है, क्यों ऐसे बोला. ओके, then just because they had nothing else to do, they go about getting into the others people hairs. Okay, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है बिपिन बाबू कि ये लोगों के पास कुछ भी काम नहीं है. कौन? परिमल घोष के पास, मतलब इस प्रकार के लोगों के पास, इसलिए दूसरों को परेशान करने में वो माहिर होते हैं और दूसरों को काम में टांग अड़ाते, ऐसे बोल रहे हैं. कौन? बिपिन बाबू बोल रहे हैं. ओके, आफ्टर डिनर स्नगलिंग, ओके, आफ्टर डिनर snuggling in bed with one of the new thrillers, Bipin Babu forgot all about the man in New Market. So now what happened? Snuggling मतलब क्या है? Settle और move. Okay, मतलब हम जब सोने के लिए जाते हैं बेड में, तो वहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं हमारे बॉडी को, कैसे सोना है, किस तरह से सोना है. हाँ, तो उसी तरह से उन्होंने बेड में सो गए, लेटा हुआ है, और वो अपना बुक्स जो लाया था शॉप से,
ये जो थ्रिलर्स, ओके, तो वही बुक्स को पढ़ते पढ़ते वो भूल गया, बाकी सारी चीज़ों को भूल गया। मतलब किसको दुकान में मिला था और वो परिमल घोष के बारे में भूल गया। वो था ज़्यादा से ज़्यादा किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन किया, ये बुक के ऊपर, बुक स्टडी में, क्योंकि वो बुक स्टडी बहुत पसंद करते थे। एंड ही वॉज रीडिंग एवरी डे। देन ही फॉरगॉट अदर थिंग्स। Then let us see. Next day in the office, Bipin Babu noticed that with every passing hour, the previous day's encounter was occupying more and more in his mind. So as next day, on that day, as he was reading the book, he forgot about the incident that took place in the shop. And then in the previous day, in the next day, as he is going to his office, and previous day incident, he is remembering everything. मतलब उसके आगे दिन क्या हुआ था, जिसके साथ मिला था परिमल घोष के साथ, तो वही सारी चीज उनके मन में ही मंडरा रही है। ओके, वही सारी चीज उसको याद आ रही है और उसको बहुत परेशान लग रही है। ओके, इफ द मैन न्यू सच अबाउट बिपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक सच ए मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप। और उसने ये सोच रहा है, बिपिन बाबू सोच रहा है कि अगर वो आदमी मेरे बारे में इतना कुछ जानता है, इतना सब कुछ उसको जानकारी मिला है, या फिर मेरे बारे में, मेरे फैमिली के बारे में, और मुझे क्या पसंद है क्या ना पसंद है, और मेरे बुक में हमेशा क्या रहते, मेरे बैग में हमेशा क्या रहते हैं, मैं ट्रिप में जाता हूँ तो ये जो ट्रिप के बारे में जो बोल रहे हैं वो कैसे गलत हो सकते हैं। हाउ कैन ही मेक मिस्टेक इफ ही इज नोइंग सच थिंग्स अबाउट मी। दैट इज व्हाट बिपिन बाबू इज थिंकिंग अगेन इनटू हिज माइंड as he is there in his office. Just before lunch, Bipin Babu decided to ring up Dinesh Mukherjee. It was better to settle the question over the phone. At least the embarrassment. Okay, embarrassment मतलब क्या है? Feeling ashamed. Embarrassment on his face would not show. So now what happened is that as he's thinking about that incident only, as he's there in the office also, then he thought that it's better that I ring up to Dinesh Mukherjee and ask him whatever may be, है ना, कुछ भी हो जाए उसको पूछ कर लेना चाहिए, कंफर्म करके लेना चाहिए कि मैं रांची गया था कि नहीं, क्योंकि ये जो चीज़ है वो मुझे बहुत परेशान कर रही। तो अभी वो उनके साथ मिलेंगे और उसके साथ मिलेंगे तो वो बात करेंगे तो दिनेश मुखर्जी थोड़ा सा फनी बना सकते, उसको मजाक उड़ा सकते, इसलिए फ़ोन में ही सेटल कर देना अच्छा रहेगा कि मुझे अगर अशेम हो जाऊंगा, अगर मैं नहीं गया था या फिर मैं गया था वहाँ पे, तो वो मजाक उड़ाएंगे, तो वो कम से कम मेरा जो अशेम, मेरा जो शर्मिंदा है वो उनको नहीं दिखेगा, मेरा फेस नहीं देख पाएंगे, फोन में सेटल हो जाएगी मटर, इसे सोच रहे वो। देन 235616 बिपिन बाबू डायल द नंबर। ओके, सुनाओ अभी बिपिन बाबू क्या किया, उन्होंने मोबाइल में या फिर फोन में नंबर डायल किया दिनेश मुखर्जी का, और कॉल करने के लिए वो अभी कोशिश कर रहा है। अभी देखते हैं। हेलो, इज दैट दिनेश, दिस इज बिपिन हियर। सो ही कॉल्ड ओवर द फोन, ही रंग द फोन एंड दैट सेड दिनेश मुखर्जी रिसीव्ड द कॉल एंड ही इज आस्किंग, हेलो, इज दैट दिनेश? हु इज आस्किंग? Bipin Babu is asking, yeah. Well, what is the news? So when Dinesh Mukherjee said that I am Bipin Babu, okay, sorry. When Bipin Babu called, then Dinesh and asked him either you are Dinesh or no. Then that said reply came, well, who replied? Dinesh Babu. Dinesh Mukherjee replied, yes, what is the news? क्या खबर है? कैसे है हालात? इस तरह से वो फोन में बात कर रहे। I just wanted to find out if you recall the incident which took place in 58. Then Bipin Babu is asking to Dinesh Mukherjee that I just want to find out. मैं थोड़ा सा कंफर्म करना चाहता था कि हम 58 में कहाँ गए थे, क्या इंसिडेंट हुए थे हमारे लाइफ में या फिर हमारे ट्रिप में, या फिर हम क्या क्या किए थे वो 58 में, उसी के बारे में वो जानने के लिए वो फोन किया है और उसी तरह से वो पूछ रहा है। Then that's a reply comes from the Dinesh Mukherjee. 58 what incident? 58 what incident? 58 में क्या इंसिडेंट हुआ था, क्या घटना हुआ था, किसके बारे में आप जानना चाहते हैं? That is what Dinesh Mukherjee say. Were you in Kolkata right through that year? That is the first thing I have got to know. Then he's asking, were you there in the कलकत्ता? Okay, और उसी टाइम में 58 में क्या आप कलकत्ता में ही थे या फिर किधर गए थे, मैं वही जानना चाहता था, बिपिन बाबू पूछ रहा है। Wait, just a minute, 58, just let me check in my diary. So now he says,
ओके 58 के बारे में बोल रहे हैं ना, रुको मैं थोड़ा सा मेरा डायरी में चेक करके लेता, किधर किधर गए थे, कहाँ गया था कि नहीं गया था, वो सब मेरे डायरी में रिकॉर्डेड है. Then for a minute there was silence. For a minute there was silence over the phone. Bipin Babu could feel that his heartbeat had gone up. He was sweating a little. तो अभी जब उन्होंने बोले, कौन दिनेश मुखर्जी बोला कि रुको मैं डायरी में चेक करता किधर गया था या फिर मैं कलकत्ता में ही था, मैं आपको 1 मिनट में बताता, तो साइलेंट हो गया जाता है थोड़ी देर, डायरी चेक करने के लिए जाते हैं तो बिपिन बाबू का हार्ट बीट स्ट्रांग हो जाता है, उसका हार्ट बीट फर्स्ट हो जाता है. हाँ, और वो स्वेटिंग होने लगते हैं. स्वेटिंग मतलब कि शरीर से पसीना निकलने लगता है. ओके, हेलो, यस आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस. ओके, तो उसने बोला, दिनेश मुखर्जी बोल रहे हैं कि हाँ हेलो, मैंने पाया, मिल गया मेरा जो 58 का रिकॉर्ड जो है वो मेरे पास मिल गया, सब कुछ है. मैं उस साल में मैं 2 बार बाहर गया था. 2 बार बाहर गया था. तो बिपिन बाबू पूछ रहे हैं वेयर, कहाँ पे? वंस इन फेब्रुआरी नियर बाय टू कृष्णा नगर टू ए nephew's wedding. So once in February, in 58 February, he had gone. Dinesh Mukherjee had gone to Krishnanagar and for his nephew's wedding. उसके nephew का शादी में हो गया था. And then, but you would know about this one, the trip to Ranchi. You were there too. That is all. But what's all this sleuthing about? Okay, sleuthing. Okay, sleuthing about. Okay, sleuthing about. So now he says, Dinesh Mukherjee also says that you must be knowing, आपको तो पता ही होगा, ये जो रांची का ट्रिप जो था दूसरे, हम अक्टूबर में गए थे और आप भी थे वहीं पे. और क्या यहाँ पे स्लेटिंग मतलब इन्वेस्टिगेटिंग, मतलब क्या यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग करने का या फिर यहाँ पे खबर निकालने का क्या मतलब है आपका? व्हाई डू यू आस्क मी? यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग दैट वन. ओके, आपको तो याद ही होगा वो जो रांची का ट्रिप जो था, साथ में थे. ओके, तो अभी बिपिन बाबू को क्या लगेगा, फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना. नो आई जस्ट वांटेड टू एनीवे थैंक्स. ओके, लेकिन वो बिपिन बाबू बोलते हैं कि नहीं, मैं सिर्फ ऐसे ही पूछ रहा था, वैसे कुछ नहीं है, ऐसे ही पूछ रहा था. थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन, दैट इज व्हाट बिपिन बाबू सेज. बिपिन बाबू slammed the receiver. Okay, slammed the receiver down and gripped his head with his hands. He felt his head swimming. So now he was there in the office. Okay, and lunchtime he called him. Okay, so as he got the news that he had been to Ranchi with Dinesh Mukherjee and other people also there who like Parimal Ghosh. Okay, and he confirmed that okay, he had been to Ranchi. Then he is not able to remember any incident. Then he slammed with what is that? Push. Okay, the receiver down. Okay, पूरा वहाँ पे वो थोड़ा सा परेशान हो गया. He felt his head swimming. उसको लग रहा है कि अपना सर घूम रहा है. हाँ, A chill seemed to spread over his body. A chill मतलब एक प्रकार का फीलिंग जो होता है, ठंडी का फीलिंग होता है. हाँ, प्लेसेंट फीलिंग्स, कि उसको बोल सकते हैं हम, प्लेसेंट फीलिंग उसके शरीर में छा गया. There were sandwiches in his tiffin box, but he did not eat them. He had lost his appetite. So now what happened? In his tiffin, in his lunch, he had taken sandwich and all that things. But when he heard the news that he had been to Ranchi and he is not able to recall anything, कुछ भी याद नहीं आ रहा है, तो उसका एप्टीट्यूड है, उसका जो हैंगर है, ओके, उसका जो हैंगर है, उसका जो भूख है, वो भी मिट गया, क्योंकि वो परेशान हो गया. क्यों? वो याद नहीं कर पा रहा है कोई भी चीज. ओके, so my dear students, here we have completed the part 2 of the story, and here the comprehension check it is. Okay, so this comprehension check, it is your work and this is your homework. You have to write it down in your notebook and forward it to me. Okay, you shall do that. Okay, you read the question, try to understand the question and find out the answer. Okay then, bye. See you again in the next video with the third part of the story. Have a good day to everyone.